Yes, good morning, dear students. So today we have a very nice topic, everything about recombinant DNA technology in detail. Starting के लेक्चर में हमने थोड़ा सा आइडिया दिया था. Now the entire process as given in the NCERT in detail. What does recombinant DNA technology involve? तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में we isolate the host DNA. समझो humans are host and human DNA में से हमें जीन ऑफ इंसुलिन को मल्टीप्लाई करना है बैक्टीरिया में. सो सबसे पहले होस्ट डीएनए को निकाला जाता है सेल के बाहर से. सेल के अंदर से we remove the DNA of the host. Then this DNA is fragmented into many pieces with the help of restriction endonuclease enzyme like EcoR1, HIND2, etc. उससे इसके pieces बनाए जाते हैं. Then we isolate the desired fragment. ये फ्रैगमेंट में जो जीन ऑफ इंसुलिन है, so we will isolate this fragment. Then we will ligate the fragment into a vector. तो समझो ये है प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के अंदर we will stick the gene of insulin, which is the required gene, into a vector like plasmid. Transfer the recombinant DNA into a host. So say E. coli host cell के अंदर इस particular plasmid को डाल दिया जाता है along with the host cell, and we culture the host cell in a medium at a large scale. एक बड़े से इंस्ट्रूमेंट which is called as a bioreactor. इसके अंदर we put the bacteria with the plasmid and the gene of insulin, and the gene of insulin will express itself to produce insulin in the bioreactor, and we will extract the desired product. तो इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो ये एक स्टेप वाइज क्रोनोलॉजी हमने की. नाउ इन मोर डिटेल, हाउ इज दिस डन? फर्स्ट वी आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. सर, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बट समझो ये बैक्टीरियल सेल है या फंगल सेल है या प्लांट सेल है, तो ये डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे? देयर इज अ सेल वॉल अराउंड इट, एंड सेल वॉल को पहले निकालना पड़ेगा. तो समझो सेल वॉल, इफ इट इज अ बैक्टीरिया, तो वी विल यूज लाइसोजाइम to break the bacterial cell wall. लाइसोजाइम की मदद से बैक्टीरियल सेल वॉल. समझो ये प्लांट सेल है, देन वी विल यूज सेल्यूलेस, एंड सेल्यूलेस से प्लांट सेल वॉल को तोड़ा जाता है. या इफ इट इज अ फंगस, देन वी विल यूज चिटिनेस. इफ यू रिमेंबर, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, तो वो चिटिनेस से फंगल सेल वॉल तोड़ा जाता है. सो बैक्टीरियल सेल वॉल विथ लाइसोजाइम, प्लांट सेल वॉल विच इज मेड ऑफ सेल्यूलोज विथ सेल्यूलेज, एंड फंगल सेल वॉल विथ चिटिनेस. तो इस तरह से सेल वॉल तोड़े जाते हैं, एंड नाउ द सेल विच यू गेट, सेल वॉल तोड़ने के बाद जो सेल है उसका सेंट्रिफ्यूगेशन किया जाता है, एंड एक टेस्ट ट्यूब में उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं. एंड
what will be you getting? तो सर आपको डीएनए भी मिलेगा, बाय द वे आरएनए भी मिलेगा, और सेल में प्रोटीन्स होते हैं तो आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे. Now we are interested in collecting the DNA. So RNA is removed by treatment with ribonuclease. Ribonuclease RNA को तोड़ डालेगा. So we add ribonuclease to it to break the RNA. Proteins are broken by protease. तो जो प्रोटीन्स होते हैं उसे तोड़ने के लिए प्रोटीएज डाला जाता है. सो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, द आरएनए रिमूव्ड बाय राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन्स ब्रोकन बाय प्रोटीएज. बच गया डीएनए. इस डीएनए के ऊपर चिल्ड इथेनॉल डालते हैं. सर चिल्ड C2H5OH chilled ethanol डाला जाता है and DNA will precipitate as thin threads. पतली पतली threads DNA की रह जाएगी. These are collected as fine threads in suspension and DNA की जो threads है ना उसके ऊपर एक स्पूल डाला जाता है. एक छोटा सा स्पूल, एक छोटा सा like a plastic spool is put inside and DNA will stick to it and DNA को isolate किया जाता है, which is called as spooling of the DNA. इस तरह से DNA को निकाला जाता है, which is called spooling. Then, sir, what are the tools of restriction and recombinant DNA technology? Restriction enzymes. ये हमने अभी अभी किया था last lecture. In the year 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteria in E. coli were isolated. तो सर दो एंजाइम ऐसे ढूंढे थे जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज प्रिवेंट करते हैं. याद है एक बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों होता है? जब एक बैक्टीरियोफाज उसे अटैक करे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियोफाज के डीएनए को तोड़ डालेगा and prevents the bacteriophage from attacking the bacteria. So restriction enzymes are the defense mechanism of a bacteria, protecting the bacteria from the bacteriophage. तो ऐसे दो एंजाइम मिले थे E. coli में से. One of them added methyl groups to the DNA and that had a different function, and the other cut the DNA and cut the bacteriophage DNA. That was called restriction endonuclease. जो bacteriophage DNA को cut करता है वो restriction endonuclease है. The first restriction endonuclease from Haemophilus influenzae was HIND2 and उसका functioning depended on specific nucleotide sequence characterized 5 years later. This is okay. HIND2 cuts the DNA by recognizing a specific sequence of 6 base pair. 6 base pair के एक sequence को ये recognize करता है और उसे cut करता है. So that is the function of HIND2. That's okay. We learn that. It's okay. And so how does restriction endonuclease enzyme work? We remember it cuts specific sequences which are called as palindromic sequences. याद है? For EcoR1 enzyme, it will cut GAA-TTC and GAA-TTC in the 5-3 and GAA-TTC and 5-3 and GAA-TTC.
और G और A के बीच में it will cut the phosphodiester bond. G और A के बीच में it will cut the phosphodiester bond. और AATT और TTAA के बीच में it will cut हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो यहां एक स्टिकी एंड आ जाएगा और यहां एक स्टिकी एंड आ जाएगा. So this is the way sticky ends are produced. Now let's see this in more detail. Sir, समझो ये है वेक्टर डीएनए, प्लाज्मिड का डीएनए, और ये है फॉरेन डीएनए, जीन फॉर इंसुलिन. तो eco R1 will cut where? Between G and A, phosphodiester bond, and between AT, और यहाँ TATA, ATAT, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो यहाँ phosphodiester bond और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये कौन सा एंड मिल जाएगा आपको? स्टिकी एंड. This is the sticky end that you get. Similarly, in foreign DNA, gene for insulin also, it will cut G और A के बीच में phosphodiester bond and यहाँ phosphodiester bond और यहाँ hydrogen bond. तो ये भी कौन सा एंड बन गया आपका? स्टिकी एंड. And then the vector DNA, plasmid DNA, and the gene of insulin are stuck together with the help of ligase enzyme, and ligase enzyme will stick the two sticky ends, and what we get is a recombinant DNA or a chimeric DNA. तो ये हमें इस तरह से मिल जाता है. So now the question is, sir, how do we isolate the DNA fragment? सर ये एंजाइम तो हम लोग बाद में यूज करेंगे. पहले जब हमने डीएनए यहां से निकाला, when we use the DNA, when we use chilled ethanol and isolated the DNA, तो डीएनए को आइसोलेट करके we cut the DNA into multiple fragments. So, cutting of DNA by restriction enzyme results in fragments of DNA. अभी उन fragment में gene of insulin किधर है? How will you know where is the gene of insulin? All fragments are mixed with each other. So, these fragments are separated by a technique known as gel electrophoresis. ये याद रखना, डीएनए फ्रैगमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. उसमें हम लोग अगारोज जेल यूज करते हैं. एंड अगारोज जेल इज अ नेचुरल पॉलीमर फ्रॉम सीवीड्स. रेड एल्गे से अगारोज जेल मिलता है. तो ये अगारोज जेल है. And agarose gel made from seaweeds, red algae, उसको एक प्लेट पे बिठाया जाता है जिसमें वेल्स होते हैं, खड्डे होते हैं. And now what do? So we load, अभी डीएनए को कट किया into multiple fragments. We put the multiple fragments of DNA into these wells. Wells के अंदर वो fragments को डाल देते हैं. अब ध्यान से सुनना. Sir, the DNA is negatively charged, and if we create an electric field, what will happen? Sir, DNA negatively charged है, ये हमने किया है पहले. तो we place a cathode here, which is negative electrode, and an anode here, which is a positive electrode.
and we create an electric field in between. And electric field जैसे ही होगा, DNA being negative will move towards anode, which is positive. Opposite charges attract each other, and DNA will start separating and start going towards the anode. And उसमें ना जो सबसे बड़े बड़े डीएनए हैं जिसकी साइज ज्यादा है वो पीछे रह जाएंगे because they are large in size, and the smaller DNAs move forward. जो छोटे छोटे DNAs है वो और भी डिस्टेंस आगे जाते हैं. Size is smaller, so we separate the DNA according to their size, and this is called as a sieving effect. इसे एक sieving effect कहते हैं, और DNA according to its size separate किया जाता है. अब अगारोस जेल के ऊपर एक नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर डाला जाता है. नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर डाला जाता है. एंड नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर डालने के बाद ये डीएनए इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. सो फ्रॉम अगार जेली इट विल ट्रांसफर टू नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, and that is called as elution, which is also called as southern blotting. So transfer of DNA from agar to the nylon membrane or nitrocellulose paper is called elution or southern blotting. Abhi sir, we have got DNA fragments, but sir DNA आपको दिखेगा कैसे? How will you see the DNA? वो तो इतना माइक्रोस्कोपिक होता है. तो separated DNA fragments are visualized after staining the DNA with a chemical called ethidium bromide. And ethidium bromide से उसको stain करने के बाद expose it to ultraviolet light. यूवी लाइट के नीचे डीएनए के फ्रैगमेंट्स देखे जाते हैं, एंड दैट विल अपीयर एज ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स. तो आपको नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए के ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड दिखाई देंगे, एंड दैट इज द वे डीएनए विजुअलाइज होता है. उसमें से जो जीन फॉर इंसुलिन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस जीन को आप आइसोलेट करते हैं, एंड दैट जीन इज नाउ रिमूव्ड एंड इट इज पुट इनटू द प्लाज्मिड and stuck with the help of ligase, as we just said, with the help of ligase enzyme. तो इस तरह से आपका पूरा डीएनए हमने पहले तोड़ा, फिर उसमें से फ्रैगमेंटेशन किया एंड उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, एंड जीन ऑफ इंसुलिन को आइसोलेट करके उसको प्लाज्मिड के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया टू मेक अ चाइमेरिक डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए. चलो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस.